Good morning, everyone. Welcome all. Welcome to our Physics Wallah. So, OPSC Wallah tarafru, there are many exciting offers. This jodi ame discuss kariba ki Sarv Saksham batch jota ki exclusively for your foundation batch pai SSC CGL pai, that is only 4499 re, and Safalta batch mains answer writing programs pai jota ki OCS ro, and that is also running, that is 3999 re, and optionals jodi dekha public administration as an optionals, that is also 2999, and Mahapack setre bi aschi amaro Mahapack re just ethi mu kochi SSC CGL pai Sarv Saksham batch la, I'm sorry, Sarv Saksham batch re amaro OCS pai, this is basically your OCS foundation batches, right? OCS foundation batch pai Sarv Saksham batch जोटा कि 2.0 जोतरे कि हम आसी 4499 रे ऑलरेडी ए बैच रे पूरा डिजाइन पूरा नुआ सिलेबस अनुसार पूरा डिजाइन हिचे, एंड सर्व सक्षम बैच इज एक्सक्लूसिवली फॉर द ओडिशा सिविल सर्विस पे सफलता बैच मेंस आंसर राइटिंग एटा भी ओसीएस रे गला दिस वन, एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ओसीएस रा ऑप्शनल्स पे महापैक रे एसएससी सीजीएल पे हमर मेनली रहउचे एसएससी आ सीजीएल्स पे एथरे रहउची एथरे सब जिंस तमे एथरे अवेल हे परियो, दैट इज आल्सो 4999 एसओ पई जोटा कि मोस्ट एक्साइटिंग एसओ पई आसी, दैट इज आल्सो 199 रे तमे पाउछो एते कम रे जो फैसिलिटी दिया होची एसओ जोटा कि लास्ट 2022 रे भारत वर्तमान पुना 25 रे पुनी, देन सोशल जॉब ऑप्शनल्स पई भी आल्सो प्रोवाइड करो सेम प्राइस रे 2999 रे. सो एते गुडा ऑफर्स ओसीएस रे तमे देखुछो फागरी की दीटा ऑप्शनल्स and two answer writings गोटे सर्व सक्षम बैच फाउंडेशन बैच पे जोथरे कि एई सर्व सक्षम बैच रे जने पाई परिबो प्रीलिम्स कम मेंस रो तमे पीटी कम मेंस दिटा पाइबो प्लस आंसर राइटिंग इथरे पाई परिबो प्रीलिम्स कम मेंस रे, राइट? सर्व सक्षम बैच इज वेरी पोटेंशियल बैच. सर्व सक्षम 2.0 ऑलरेडी सर्व सक्षम गोटे चल, so definitely it will help you out for the those who are college newcomers or those who are job holders, समस्त को पाइटा बहुत ही बढ़िया. ओके, आगु जीवा पुणी डिस्कस करिवा कि आज हमें देखिबा कि विल गो फॉर दिस ज्योग्राफी ओडिशा फिजियोग्राफी ऊपर आज हमें नबा. सो ओडिशा फिजियोग्राफी जदि देखिबा कि ओडिशा पार्ट रे ओडिशा रो क्वेश्चंस प्राय पचारचुंदी, एटा हमर गोटे फ्री सेशन आंसर राइटिंग रे बहुत जगह रे जदि हमें थॉट्स देखिबा कि व्हाई इट हैज कोन पे दिया है, बिकॉज़ कि बहुत जगह पिला फेस करते प्रॉब्लम आंसर राइटिंग कला बेले जदि हमें देखिबा बहुत जगह प्रॉब्लम भी खास करके ओडिशा पार्ट रे कोनटा हमें लिखिबा कोनटा नहीं. सो डेफिनेटली एथरे किछ भाबियार नहीं कि वेरी कंसाइज वे रे मु कहबी आ को जगह फोकस करबी. सबुठ बड़ जिंस हला कि जदि हमें इंडिया पढुचंती ताले ओडिशा इज नॉट अदर देन दैट वन. सो एटा खाली गोटे बहुत बड़ हाइप कि ओडिशा पार्ट सेमति किछु नो जहाँ तुम व्हाट एवर यू आर स्टडिंग इन योर इंडियन ज्योग्राफी, सो ओडिशा पार्ट रे भी से जिंस कवर होछ. हां, ओडिशा रे टिके स्पेशल फोकस देबा पड़ी. जेमति आज हम देखबा ओडिशा रा फिजियोग्राफी पार्ट रे, राइट? फिजियोग्राफी सेंस रे हम कोन रखुछन, व्हाट डू यू मीन बाय द फिजियोग्राफी? ओके, फिजियोग्राफी माने हला कि कोन कोन हम देखिबा फिजियोग्राफी जदि हम कवर करियो. फिजियोग्राफी रे ओडिशा रा आसी मेजरली जदि हम देखबो तो फिजियोग्राफी ऑफ ओडिशा मेनली कवर्स को एरिया द योर फिजिकल टेरेन को पार्ट रे आसीबो फिजिकल टेरेन, राइट? फिजिकल टेरेन्स आसीबो. देन एथरा हमर आसीबो फिजिकल रे जेंस योर माउंटेन्स रे स्पेशली किए ईस्टर्न घाट माउंटेन्स रे किए आसीबो स्पेशली योर ईस्टर्न घाट टा ओडिसा रे मेजरली जाय छि. देन योर सेंट्रल tableland, right? And your coastal plains, right? And coastal plains, these are the ithra me cover kariyo majorly. Coastal plains also they are in Odisha physiography part re. तो सेम जिंस जदि कहबा और इजी लागियो कि ओडिशा पार्ट रे जदि हमें देखिबा कि इजी रे जेमति इंडिया रे हमें पढितले सेम थिंग एठी ओडिशा रे भी हमें कवर करियो कि इंडिया रे
जो पार्ट रे में पढ़ी इंडिया फिजियोग्राफी रे सेम थिंग हियर आल्सो विल गेट इट राइट देखिबा सो प्रथम ये डिस्कस करिए कि ओडिसा रा जदि हमें डिस्कस करबा हाउ मेनी केतेटा अछि हाउ मेनी स्टेट्स हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर एठी जदि मु लिखिबी कि हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन ओडिसा प्रथम हम जानिबा ओडिसा विषय रे हला जस्ट फॉर ग्लिम्पसेस केमति जाने कहला बडे तुम लिखिबो हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन ओडिसा हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन ओडिसा how many districts are there how many केते कहया so ओडिसा रे जदि हम देखबा कि it is your about 30 districts it is your 30 टा districts are 30 districts are there 30 districts are there all total right 30 districts are there अच्छा ओडिसा रो फॉर्मेशन जदि हम देखा केबे हेतला इट वाज 1st अप्रैल देखबा जदि प्रथम 1st अप्रैल 2000 सॉरी 1936 रे प्रथम ओडिसा लिंग्विस्टिक डिवीजन हेतला पूरा जदि इंडिया रे देखिबो हमर ही राज्य प्रथम फॉर्मेशन हेतला फर्स्ट लिंग्विस्टिक बेसिस रे 1st अप्रैल 1936 रे फॉर्मेशन हेतला एंड दैट इज एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जानिबा हम ओडिसा विषय रे टिके तापरे हम पुनी ये करबा it was on the 1st April 1936 the Odisha was formed as a separate province one separate province है कि प्रथम ओडिसा फॉर्मेशन हेतला 1st April 1936 मसिया रे प्रथम okay province by the government of India Act 1935 government of India Act 1935 रे however it was on the linguistic identity रे हम प्रथम ये तो linguistic माने जेंते ओडिया एज ए लैंग्वेज मन रख हला ओडिया एज ए लैंग्वेज ठीक अछि ओडिया एज ए लैंग्वेज बहुत जन कहते कि आंध्र प्रदेश नो इट इज तेलुगु स्पीकिंग प्रथम स्टेट रियलाइजेशन आर्ट रे करथिले बट ओडिसा आगे नंबर 1 थिला माने आई मीन जदि तमे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट रे देखिबो ता परे इंडिपेंडेंस परे ठीक अछि इंडिपेंडेंस परे प्रथम आंध्र प्रदेश को देले बट ता रा बहुत पूर्वरु बिफोर इंडिपेंडेंस पूर्वरु 1937 मसर ओडिसा एज ए लिंग्विस्टिक बेसिस रे अच्छा वर्तमान हम आसीबा कि फिजिकली फिजियोग्राफिकली ओडिसा रा प्लेसमेंट ता जदि हम देखिबा कोठी पूरा जदि इंडिया रे हम देखिबा ओके अच्छा आटलास हम जदि देखिबा पूरा हमर ओडिसा रो इट इज योर बे ऑफ बंगाल एटी गोटे डायग्राम बनेला आ तुमको इजी रहबो समस्त को डायग्राम टे बनै दोछि इट विल बी मोर इजी फॉर ऑल ऑफ यू राइट सो ओडिसा रो प्लेसमेंट जदि हमें देखिबा इट इज like this ठीक अछि ओडिसा रो प्लेसमेंट हमरा इट इज हियर दिस इज द प्लेस ना टिके पट को पसी अछि like this so this is our state Odisha and it हमर के रहला this is your Bay of Bengal right Bay of Bengal so this is ए पार्ट कौन रे this is your Chilka Lake right this is your Chilka Lake right अच्छा Odisha रो प्लेसमेंट हमें देखुछन this is Odisha रो प्लेसमेंट this is the placement of Odisha right okay
I'm sorry. Just a minute, sorry. अच्छा ठीक अच्छे तो ये आम देखिले कि प्लेसमेंट रे कि ओडिशा 30 डिस्ट्रिक्ट्स आछि तो ओडिशा दिस इज राइट सो ये देखा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये पास करी जाइए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज पासिंग थ्रू दिस वन दिस इज योर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर राइट दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इट passes थ्रू योर 23.5 डिग्री ना ओडिशा देखि 23.5 डिग्री देखि पास करी जाइए 23.5 डिग्री राइट अच्छा तापर आमे कौन देखिबा ओडिशा उपरे कि जदि आमे देखिबा कि द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एटी गोटे जिंस लिखिबा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ओके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डजंट पास थ्रू बहुत जगह कंफ्यूज हो ओडिसा फिजिकल आमे जदि जानिबा कि डजंट पास थ्रू ओडिशा मन रखो एटी नोट रे म लिखुची ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू योर ओडिशा डज नॉट पास थ्रू ओडिशा पास थ्रू द ओडिशा doesn't pass through the Odisha देखी इसे pass करनी topic of cancer right it doesn't pass through the Odisha अच्छा एठी दे हमें देखिबा कि latitude of Odisha lies between केते रहउची Odisha latitude it lies 1749 17 degree 49 to 20 degree 34 north कौन पे because एठी जदी हमें देखिबा कि placement India रा कि 0 डिग्री इक्वेटर कोडी जाइछि इट हला श्रीलंका दिस इज योर श्रीलंका राइट दिस इज श्रीलंका एंड इट इज पास थ्रू दिस इज 0 डिग्री इक्वेटर राइट 0 डिग्री इक्वेटर तो यार ऊपर ता माने इंडिया इज लाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर दैट इज व्हाट जो एन जो लिखा होछि इंडिया लाइज इन योर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर दैट इज व्हाट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ही इंडिया लाइक होछि दैट इज व्हाट ओके तो एठी हम लिखिबा कि योर Odisha lies in hello Odisha India lies in northern hemisphere India lies in northern hemisphere से जो लिखा हो एटा ए जिंसटा northern hemisphere राइट से जो हमर लिखा हला इटे ऐसा latitude माने भी जानछन latitude goes through your horizontal lines and longitude hela ए बोले this is latitude longitude already we know this is the latitudes right these are the latitudes these are your latitudes we can say these are all your latitudes and these are your longitudes right these are your longitudes these are your longitudes latitudes and longitudes these are right latitudes and 8127 east to 8729 east longitude हिसाब रे 8127 atlas जेतेबेले भी तमे पढुछो सबले मन रखो atlas टाको सबले रेफर करियो because atlas gives an proper direction and clarity of your understanding in your understanding तमे जो भाबे जिंस देखुछो atlas सबले देखियो because atlas gives an clarity over your understanding right just look at here तमे एठी देखो very clearly एठी मेंशन है हम ओडिसा this is very clearly एठी मेंशन है सब बडे atlas रे देखले को मेंटल इमेज ता रहिबो आ मन रखो वर्तमान आगु को सिविल सर्विस एग्जाम रे बहुत अधिक समान क्वेश्चंस पकेबे रिलेटेड योर मैपिंग फिजिकल काहे कि ना कि गोटे एडमिनिस्ट्रेटर को बहुत जिंस जानिबा दरकार सब जिंस नॉलेज रहबा दरकार हम ओडिसा स्टेट रे कोटी कोन अछि इंडिया रे कोटी कोन अछि सो दैट इज व्हाई योर दिस मैपिंग पार्ट is always important for your image clarity and vision clarity right area हिसाब से देखिबा ओडिया ओडिशा टोटल इंडिया रा 4.73 TG of India TG माने टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया तो ओडिशा रे केते टोटल स्क्वायर किलोमीटर इट इज 1,55,707 राइट तो हम देखिबा कि 1,55,707 हला ओडिशा रा हमरो जदि देखिबा हमर टोटल total area this is the total area of amaro
ओडिशा रो टोटल योर एरिया ऑफ ओडिशा टोटल ओडिशा रो एरिया एटा ज्योग्राफिकल एरिया पॉलिटिकली हमको एतिकी सैंक्शंस करा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओके सो टीजीए माने टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ टीजीए मींस टोटल ज्योग्राफिकल एरिया टोटल ज्योग्राफिकल एरिया इंडिया रे जति 4 पॉइंट माने पाखा पाखी पूरा इंडिया रे 5% रो एरिया है ओडिशा पाखे अच्छा आगु जीवा The coastline of Odisha has a span of 575 km. जदि हमें ओडिशा रा coastline देखिबा it is near about a span of 575 km. 575 km कोठु ओडिशा रा मागु कहिबी ओडिशा रा coastal माने जदि हमें देखिबा कि your this is the coastline ओडिशा रा coastline कोठु आरंभ होइछि this is बालेश्वर रे पाखरु हला this is बालेश्वर नेकी till your Ganjam Parjanta. This is your coastline of Odisha. We can say this is the coastline of Odisha. This is your Bay of Bengal coastline of Odisha. Coastline of Odisha. It starts from your Baleshwar आरंभ till Ganjam Parjanta. ठीक अछि तो जदि पचारिबे सपोज गोटे क्वेश्चन पचारले कि हाउ मेनी कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन ओडिशा केतेटा कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स अछन वी कैन से हाउ मेनी कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन ओडिशा ओके हाउ मेनी कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स सपोज गोटे क्वेश्चन पचारले केते क्वेस्ट आर देयर तमे कोन लिखियो आंसर सपोज देख पचरा होची हैला केतरा अछि ओडिसा कोस्टल डिस्ट्रिक्ट how many coastal districts are there so ati ame likh paribo the coastal districts are basically starting from north to south it is Baleshwar बुझी परछ केमति लिखिबा बालेश्वर बुझी होची केमति ame लिखिबा कि बालेश्वर रु आरंभ होई कि एठी बालेश्वर आसिला बालेश्वर पर की आसी होता तापर तमे निजे को बालेश्वर पर जदि हम देखिबा बालेश्वर पर आसी तमरो भद्रक बालेश्वर पर भद्रक आसी भद्रक पर पुनी केंद्रापड़ा जगतसिंहपुर पुरी देन योर दिस खोर्धा गंजाम एति के आसी हमर टोटल भूल रे भी तमे लिखला बेले भद्रक माने भद्रक पर संग संग जगतसिंहपुर आनी माने बहुत जगह में देखि कि भद्रक पर संगे संग जगतसिंहपुर नै जानती बट भद्रक पर जदि तमे देखिबो तमरो जगतसिंहपुर हबनी हला भद्रक पर केंद्रापड़ा आसी तमे एठी कोन लिखि परिबो कोन लिखि पारे पिला एठी बालेश्वर पर देन अगेन भद्रक देन केंद्रापड़ा भद्रक पर पुनी आसी योर केंद्रापड़ा ओके केंद्रापड़ा देन जगतसिंहपुर एंड योर पुरी परे तमर खोर्धा आसी बहुत भला मन रख पुरी परे तमर खोर्धा आसी पुरी परे तमे देखछो दिस इज खोर्धा प्रथमे पुरी तापर आसी तमर खोर्धा हैला जगतसिंहपुर पुरी खोर्धा देन योर गंजाम तो ऑल टोटल केतना हला हमर टोटल 1 2 3 4 5 6 7 सातटा हमर कोस्टल डिस्ट्रिक्ट आसी हला 6टा नो 7टा हला की आसला हमर प्रथमे बालेश्वर पर भद्रक पर केंद्रापड़ा देन जगतसिंहपुर देन पुरी देन योर खोर्धा देन गंजाम सो क्रोनोलॉजिकल एटा रहला लिखला बेले आंसर लिखला बेले मन रख गुड आंसर गुड मार्क की पाए जहार क्रोनोलॉजी मेंटेन हेता ए जिंसरा हम वेरी क्लियर कहूची जहार क्रोनोलॉजी और सिंक्रोनाइज हेता है आंसर रे से जिंसर ताकू इजी रहे माने मार्क्स आर इजी पर्टिकुलरली जदि हमें देखिबा कि स्टेप मार्किंग सेफ रे भी हुए काको एग्जामिनर डिसाइड करियो कि नहीं माको बेसी देबी कि कम देबी इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन योर जो देखियो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर राइटिंग कोहेरेंसी केमति तमे ताको पोर्ट्रेट करछो राइट अच्छा एटा तो बुझी हला एटा हला हमर ओडिसा कोस्टल पार्ट परे नेक्स्ट ओडिसा प्लेसमेंट आमे देखले कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ओडिसा दे की पास करूनी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डजंट पास थ्रू द ओडिसा
राइट ओडिशा ऊपर देखि पार्ट्स हो आ तुम जदी एटलास रे भी देखियो इट इज मोर क्लियरली एठी मु भी देखै दउची तुमको एटलास रे पूरा क्लियरली देखा क्लियरली मेंशन है इट इज नॉट पासेस थ्रू ओडिशा ऊपर देखि जाउ जस्ट टिके ऊपर को झारखंड ऊपर देखि पड़ोछ झारखंड रे देखि जाउछ हला से जो एठी तमे एठी हमें देखिले ओडिसा रे केते रहउची अपर लिमिट 70 रे नेकी योर 22 डिग्री 34 मिनिट नॉर्थ हमर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अछि केते निजे देखो तमे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एठी देखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अछि 23.5 ओडिसा रहउची केते 22 डिग्री 34 मिनिट हला तो मैक्सिमम लिमिट हमर केते एठी जदी मु ड्रा करबी हला एठी जदी हम ओडिसा रे देखिबा इट इज योर 22 डिग्री 34 मिनिट नॉर्थ 22 डिग्री 34 मिनिट नॉर्थ है 22 डिग्री 34 मिनिट नॉर्थ एठी हमर देखा दिस इज क्लियर अच्छा एठी जदी हम देखिबा कोन एटा हमर मैप देखौची गोटे ओडिशा मैप रे एटा लॉटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ऊपर टोटल ओडिशा ऊपर मैप टा अछि को जगह रे ओडिशा रो मैप रे हमर शो करछि these are the some important cities of Odisha ro important cities Sundargarh Turniki Jharsuguda this is Sundargarh Jharsuguda Kendujhar Baripada Baleshwar Bhadrak Kendrapada Jagatsinghpur this is the total acha ठीक अछि next हमें जीवा the physiographic classification of the state right physiographic classification of the state रे कोन physiographic classifications अछि right first देखिबा the northern plateaus बहुत इंटरेस्टिंग ए पार्ट रे देखियो northern plateaus just a minute अच्छा ए पार्ट रे बहुत रे थी ऑलरेडी एठी हम देखले कोन कोन एथि बुझिबा टिके बहुत इंपोर्टेंट दिस इज राइट ओडिशा पार्ट रे नॉर्दर्न प्लेट्यू रे जदी हम देखिबा नॉर्दर्न प्लेट्यू ओडिसा रे जदी हम एठी हम डिस्कस करिबा अच्छा कलर टिके चेंज कले बेटर रहइबो यस पथा हमर देला कि नॉर्दर्न प्लेट्यू एठी पढलो तमेरे कि नॉर्दर्न प्लेट्यू सो एठी मु एठी लिखि परिबी नॉर्दर्न प्लेट्यू रे वी कैन से दिस पार्ट इज योर ओडिसा र प्रथम पार्ट तक मु देली कि योर हिल्स ओके नॉर्दर्न द नॉर्दर्न hill pockets hills and plateaus नहीं पर hills and plateaus के जीवो northern hills and plateaus प्रथम निजे को very simple केमि तमे अप्रोच करियो प्रथम स्टार्ट करियो northern hills plateaus कोन कोन होबो northern hill plateaus माने फर्स्ट हमें देखिबा northern hill plateaus रे के आछे ओडिसा रा हला ओडिसा रा फिजियोग्राफिकल एस्पेक्ट्स ना को स्टेट्स को डिस्ट्रिक्ट्स आछन जो माने छोटा नागपुर प्लेट्यू को एडजेसेंटली अछंती अच्छा एटा करले तमे आहुरी बुझी जो बेटर अच्छा नॉर्दर्न प्लेट्यू रे छोटा नागपुर प्लेट्यू अछि कोठी दिस इज योर छोटा नागपुर प्लेट्यू एटा हला छोटा नागपुर प्लेट्यू राइट दिस इज योर हमें जानले दिस इज योर छोटा नागपुर प्लेट्यूज छोटा नागपुर प्लेट्यू इंडिया से देखियो दिस इज योर छोटा नागपुर प्लेट्यू राइट छोटा नागपुर प्लेट्यू हमर रोज छोटा नागपुर प्लेट्यू रे सदर्न परसेंट जदी सदर्न एरिया में देखिबा कि मेजॉरिटी छोटा नागपुर प्लेट्यू रो मेजर परसेंट है को डिस्ट्रिक्ट ओडिसा रे आछन छोटा नागपुर प्लेट्यू रे मेजरली एठी हम मेंशन करिबा कि तीनटा डिस्ट्रिक्ट द 3 northern district 3
northern districts three northern districts, right? Three northern districts, they comes under the southern part of Chota Nagpur plateaus. Chota Nagpur plateaus. Ki samane Chota Nagpur plateaus. Basically, three northern districts. They are ki samane ki तीन डिस्ट्रिक्ट तुम निजे को एठी जदि हमें देख तुम निजे को रे एठी तुम को किए से तीनटा डिस्ट्रिक्ट या भितर जो माने कि छोटा नागपुर प्लाट्यू रे मैं कहबी वेरी इंटरेस्टिंग किए से माने बेसिकली जदि हम देखिबा तीनटा नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट रे इट इज मयूरभंज केंदुझर सुंदरगढ़ तुम निजे देखो झारखंड सांगु के माने लागि गछन दिस इज झारखंड ऊपर ऊपर जो तुम देखुछ दिस इज झारखंड राइट एठी भलो भाबे देखो ए जो पर्सन तुम देखुच दिस इज नथिंग बट योर झारखंड एरिया है झारखंड राइट दिस इज योर झारखंड दिस पार्ट योर झारखंड पूरा कवर कर राइट भला भाबे नीचे भी देखो दिस पार्ट इज नन अदर देन योर झारखंड सो ए माने हम कोन लिखिबा ताले आंसर रे सो दिस पार्ट हम लिखिबा he comes under your they are Mayurbhanj के जिबे they are your Mayurbhanj हला आउ के Mayurbhanj हला then Kendujhar and Sundargarh तीनटा आसन and Sundargarh ये तीनटा आसन मेजरली हला Mayurbhanj Kendujhar and Sundargarh these three are coming अच्छा से एठी जदि देखिबा कि नॉर्दर्न प्लाट्यू ओडिसा रा आसी एठी देछि हिल्स एंड प्लाट्यू एक्चुअली नॉर्दर्न एठी हम लिखि देबी नॉर्दर्न हिल्स एंड प्लाट्यूज राइट नॉर्दर्न हिल्स एंड प्लाट्यूज हिल्स रे तेठी की जीवो मेजरली जदि हम देखिबा हला एई पार्ट रे ईस्टर्न घाट तक मु नै होछि ईस्टर्न घाट रो जदि हम देखिबा एठी हला द ईस्टर्न घाट है द एटी लिखि दउची द ईस्टर्न घाट हिल्स starts its journey from Mayurbhanj से स्टार्ट करछि फ्रॉम Mayurbhanj district from Mayurbhanj district in Odisha वाज इट इज बिलीव दैट वन Mayurbhanj district to Odisha से आरंभ करछि ईस्टर्न घाट राइट अच्छा पुणी नॉर्दर्न प्लाट्यू रे की आसो तापर जाजपुर जदि तुम एठी देखुछ भी मैप रे भी जस्ट एठी देखो को प्लाट्यू एठी आसी जस्ट लुक एट हियर एटी जब तुम देखो केन्दुझर पाखापाखी ये जो पार्ट नॉर्दर्न पर्सन रे योर जाजपुर इज आल्सो देयर ए पार्ट रे जाजपुर जोटा कि बॉर्डर अच्छी केन्दुझर ए पार्ट रे एठी गोटे सुकिंदा वैली अछि माने प्लाट्यू टाइप सुकिंदा प्लाट्यू ए जगह रे ए पार्ट रे केन्दुझर रो ए पार्ट रे जो हिली एरिया नॉर्दर्न पर्सन हमरो एठी सुकिंदा एरिया भी अछि सुकिंदा हला एठी हम कोन लिख परिबा दिस इज योर सुकिंदा वैली सुकिंदा वैली Sukinda plateau valley or Sukinda valley. अच्छा exactly. What does it mean by the plateaus? Plateaus are basically an table elevated land, table surface land. मन रखो ये Sukinda हमर अछि जाजपुर और केन्दुझर बॉर्डर रे जोटा जिनस is very mineral rich belt. लिखियो very interesting इटी. सो हमें जानले कोन सो इटी देखिलबा कि मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट ओडिसा ईस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट ऊपर मु स्पेसिफिकली पुनी कहबी अच्छा हिल्स रे हमें देखले ईस्टर्न घाट हिल्स रो एठी हमें देखले मेजरली तापरे प्लाट्यूज जदि देखिबा द अच्छा द प्लाट्यूज हला
one important plateau. Plateaus are basically, we लिखी दोचे, plateaus are basically flat elevated land, flat elevated land. Plateaus माने कौन? They are the flat elevated land. Flat and elevated land. Plateaus are basically flat elevated land. एमती रहता है. एमती गोटे टेबल, तमें जो टेबल देखो टेबल सरफेस टाइप रो. सेम थी एग्जैक्टली. तो हमर की हैला एटी एग्जांपल में लिखिए योर फेमस सुकिंदा वैली. It is your Sukinda Valley in Jajpur district. Sukinda Valley in Jajpur district. है ना? Jajpur district जोटा कि केन्दुझर आउ जाजपुर रे बॉर्डर ही के अछि. Just look at here. केन्दुझर आउ ये रे बॉर्डर ही के अछि सुकिंदा. है ना? Next. So इटा में देखिले कि northern hills और plateaus आउ कोन में दे परिबा कोन लिखि परिबा better. So hills और plateaus लिखला and एटी लिखि परिबा these plateaus are एटी में लिखि परिबी the plateaus are the Sukinda plateau, Sukinda valley or Sukinda valley or plateau Sukinda valley your holds rich reserves of chromite कौन chromite iron ore है ना chromite iron ore अब कौन chromite iron ore and manganese है ना manganese Sukinda valley major except Sukinda valley रे इतनी important जिनस अछि जोटा कि हमर रोज rich iron ore right Sukinda valley ठीक अछि टिके एठी मु तळ कर देला बेटर reach jobs just a minute. Sukinda valley holds rich reserves of a mineral chromite iron ore manganese la au basically chromite iron ore manganese au pyrite of chromite ऊपर गेज वाले मॉडल लिखने iron ore and manganese basically and manganese right Sukinda अच्छा आउरी कोन हे परिबो नॉर्दर्न हिल्स रे नेक्स्ट आसीबा पुनी कोन देछि प्लेट्यूज गला द सेंट्रल टेबल लैंड माने को पट्टा देखिबा सेंट्रल टेबल लैंड ता माने निश्चित रूपे ए पार्ट रे होछ सेंट्रल टेबल लैंड this area these are the areas ओडिसा रा सेंट्रल टेबल लैंड ए पार्ट रे सेंट्रल टेबल लैंड माने टोटली अनुगुल ढेंकानाल हला अनुगुल ढेंकानाल आउ जदी देखिबा योर बौद्ध नायगढ़ ए पार्ट रे आछे सेंट्रल टेबल लैंड एठी हम कोन लिख परिबा द सेंट्रल टेबल लैंड हला सेंट्रल टेबल लैंड पर्सन्स ऑफ ओडिसा द सेंट्रल टेबल लैंड इट सेकेंडरी दे दो सेकेंडरी जीरो द सेंट्रल टेबल लैंड जोटा एबे हम डिस्कस करले सेंट्रल टेबल लैंड माने ओडिसा रा हला टेबल लैंड एरिया कवर्स अनुगुल ढेंकानाल बौद्ध मिकलेठी देखो तमें अनुगुल बौद्ध सुवर्णपुर सोनपुर जोटा कि आउ कंधमाल
है ए पार्ट बौद्ध कंधमाल सोनपुर आल्सो है बौद्ध कंधमाल एंड सोनपुर बौद्ध कंधमाल एंड सोनपुर आपको मेजरली माने आसंती राइट एटी ए डिस्ट्रिक्ट माने एक्सेट्रा आसंती माने ए पार्ट रे माने कवर करंती सेंट्रल टेबल में दे आर आल्सो सेंट्रल टेबल लैंड माने कोन गोटे बहुत बड़ चट्टान बहुत हेवी इट इज वेरी हेवी बहुत बड़ चट्टानटा माने आई मीन जब तुम देखिबो कि इफ यू मीन्स आई मीन वेरी रिजिड माने जदि तुम ड्रिल भी करिवो ड्रिल रो येटा भांगी जिवो हैला so it is like central tableland is basically highly rigid surface highly rigid mass this is central tableland is highly rigid mass very है ना बहुत rigid central tableland अच्छा so there also it will लिखियो कि there are also these areas also your कौन लिखियो हमें इतने there are also rich mineral resources rich mineral reserves there rich mineral reserves variety of minerals three option variety very rich mineral reserves or mineral reserve resources rich mineral resources ए पार्ट रे थर्ड रे कोन आछि पुनी हम देखिबा थर्ड रे आछि हमर ईस्टर्न घाट हला एतिक हम सरला नेक्स्ट विल कम टू द ईस्टर्न घाट रे देखिबा कोन आछि हमर ओडिसा रे थर्ड रे ईस्टर्न घाट पुनी जदि हम देखिबो ईस्टर्न घाट अच्छा ईस्टर्न घाट ऊपर टिके देखिबा ईस्टर्न घाट र स्पेशलिटी ईस्टर्न घाट हला ओडिसा रे एटा बेटर हो ईस्टर्न घाट ओडिसा रे जदि तमे देखिबो कि ईस्टर्न घाट एक्चुअली इट डिसकंटिन्यूअस इट्स नॉट कंटिन्यूअस लाइक योर वेस्टर्न घाट इट्स डिसकंटिन्यूअस एंड रादर इफ आई से ओडिसा रा पूरा सेंट्रल पर्सन इटा कवर करछि ईस्टर्न घाट्स इट इज कवर लाइक ईस्टर्न घाट टा मोइट बनौछि एना बनेला और क्लियरिटी हो ईस्टर्न घाट एमति कवर करछि इट इज जस्ट लाइक दिस इट कवर्स राइट इट कवर्स एमति लाइक ओडिसा रे एमति देकी ईस्टर्न घाट टा एभा जाउछि ए पार्ट रे ओडिसा ईस्टर्न घाट टा हमर एही सब जाउछि और बेटर जदि आउरी गोटे डायग्राम बने भी आउरी बेटर रहइबो इट कम्स लाइक दिस कोस्टल बेल्ट इट इज लाइक दिस ओडिसा ईस्टर्न घाट टा हमर एमती जाउछि तळकु एमती ताई पुनी आंध्र प्रदेश एपटे तेलंगाना हेकी पुनी जाउछि दिस इज योर नथिंग बट ईस्टर्न घाट ऑफ कोर्स कला बळे केमती डायग्राम कला बळे तुम केमती करिवो जस्ट you have to draw like this diagrams like this केमती डायग्राम परीक्षा कला बळे और इजी रहइबो तुमको that you draw like this ones diagram mountains गुडा एमती दो it is just like your mountain this one this is your mountain like this right this is a mountain so it हम कोन दबा काहे कि माउंटेन दबाटा चिन्हटा दबा बहुत जरूरी माउंटेन चिन्ह because it specifically denotes that these are the mountain ranges it specifically denotes that one so we have to here this one this is your eastern घाट्स भूल रे भी तमे कोस्टल एरिया को आनी बनी मन रखो ईस्टर्न घाट इतल तमे डायग्राम करछो भूल रे भी कोस्टल एरिया को आनी बनी बहुत पूरा भूल हे जो ब्लंडर काहे कि एपटे ऑलरेडी मन रखो एपटे सलाइन अछंती सलाइन वाटर एपटे दिस इज योर सलाइन सॉइल्स पुनी एपटे आसिला हमरो एपटे पुनी हमर रहि गेला कि एलुवियल सॉइल्स ता परे एपटे
केबे भी ईस्टर्न घाटा जमती वेस्टर्न घाट कौन कर पूरा बॉर्डर हे की इंडिया भितर है सेमती एठी जाइनी तुम यही पार्ट रे तब जब ये मैप रे जो मु बनैली है ये मैप रे आम जो देखिले वेस्टर्न घाट टा तुम बुझ भला वेस्टर्न घाट टा एक्चुअली एमती जाइछि वेस्टर्न घाट टा ये कोस्टल प्लेन टा नैरो वेस्टर्न घाट टा एमती जाइछि पूरा एकदम साइड रे जाइछि पूरा एकदम पूरा कंटिन्यूअस चेन एटा एमती जाइछि वेस्टर्न घाट टा एमती जाइछि पूरा कंटिन्यूअस बट ईस्टर्न घाट टा तुम एमती आछि पुनी एपटे पदा खंडे पुनी एठी जाइके आसी एठी मिस एटा ईस्टर्न घाट सो जेतले तुम डायग्राम बनौछ यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक दिस इज योर वेस्टर्न घाट्स आउ हमर एठी लिखला ओडिसा में पढछन इट इज योर ईस्टर्न घाट बुझी होची क्लैरिटी रहउची अच्छा पुणी तापरे हमें देखले ईस्टर्न घाट सेठी हम कोन लिखबा ईस्टर्न घाट they run from Mayurbhanj district to Malkangiri Koraput okay Mayurbhanj district to এটা আমি দেখলে then Malkangiri ହେଲା Mayurbhanj district to Malkangiri via Angul Dhenkanal and Kandhamar बौद्ध and Kandhamar बौद्ध और कंधमाल सेपट देखिए पेपर अच्छा ईस्टर्न घाट रे गोटे स्पेशलिस्ट है गर्जाट हिल्स है गर्जाट रेंजेस इट देखियो अपन द गर्जाट रेंजेस हिल रेंजेस गर्जाट हिल रेंजेस Ghats mountain ranges mostly located koti hochi Ghats hill ranges they mostly located in Ghats hill ranges they located it at Angul district mainly Angul out Dhenkanal the time Angul Dhenkanal Angul Dhenkanal district से तमे एटी डायग्राम रे भी भला भाबे देखो एटी Angul और Dhenkanal पूरा हैला ए पाखर देखि जवन पूरा पास करि जाई Angul और Dhenkanal मोस्टली ठीक अछि ओके ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक ईस्टर्न घाट who are the highest peaks of Western Ghat Eastern Ghat the highest peaks of Eastern Ghat the highest peaks of the Eastern Ghat ये highest peaks of Eastern Ghats they are the highest peak Eastern Ghat your जमती है स्टार्टिंग रू जमती कहला देवमाली हिल्स देवमाली कोठी अछि
who can say where is Devamali hills in Koraput, it likhibo Devamali hills in Koraput likhla bole important point a sabu bole chronological major second number ki asibo Mahendragiri, next asibo ki Mahendragiri, okay, Mahendragiri bhi asibo in Gajapati district. Mahendragiri is in Gajapati. Malaygiri, Angul, है ना, Malaygiri, your Malaygiri, it is your Angul district. Malaygiri is in your Angul district. Then Devamaligala, Mahendragiri, Malaygiri, and Gandhamardan, important. Gandhamardan, your Bodh and Kandhamar, etc. Bodh and Kandhamar. So these are the Eastern Ghats major cover करछन्ती Eastern Ghat ranges. Eastern Ghat विषय जदि हमें जानिबा कि they are the full they are the storehouse of your mineral reserves. Mineral reserves majorly storehouse. So it हमें लिखि भी परिबा कि Eastern Ghats, the Eastern Ghats are the storehouse of mineral reserves. They are the storehouse of mineral reserves. The storehouse of important mineral reserves such as such as storehouse of your storehouse of important mineral reserves such as iron ore, iron ore, right? It is your iron ore, bauxite, chromite, बहुत बढ़िया है ना, माने important है iron ore, bauxite, chromite, manganese, etc. Major जितने important industrial your minerals those are really essential for your industries. Steel, iron, iron ore हमर की है परिवटी iron and steel industry, iron and steel industry हम कही परिव iron and steel industry की majorly your iron and steel industry, bauxite, this is your aluminium industry, aluminium industry. Then chromite कोट्री यूज हुए तुम्हारा steel making रे chromite यूज हुए, steel making रे chromite ए दीटा भी तुम्हारा steel रे iron and steel रे भी यूज हुए, they are used for steel making and alloy and alloys, right? Majorly. So it is central tableland, eta. Then next you are the coastal plains. Coastal plains Odisha के रहे, who are the coastal plains? Coastal plains रे हमें देखिले, right? Coastal plains जदि हमें देखिबा कि ओडिसा major बालेश्वर नेकी till your कहा जाए कि हमर आसी गजपति बंद. तो एटा की करछिंदी coastal plains टा हमर जो बना होची majorly your the 6 rivers हैला सेमाने तंकर गोटे एठी very fertile गोटे कहा जाए कि hexadeltaic plains सेमाने बनोतन 6टा river कहा जाए, and the coastal plains टा majorly 7 districts, okay,
and this coastal plain जदि देखिबा कि this coastal plain area टा कहाँ पे है? This is the alluvial sediments deposited by the important rivers. अरे प्लेन टा केते बड़े तमर हो डेल्टाइक प्लेन टा जदि रिवर डिपोजिट करिवो तापर जाई कि तो प्लेन हो ना, तो एठी हम लिखि परिबा this hexadeltaic plane एम देखिले the coastal plains कौन तमे लिखिबा एठी the coastal plains of Odisha, the coastal plains, it is the plains are the coastal plains are formed by the important rivers, such as there like your important rivers Mahanadi, then Subarna Rekha और स्वर्ण रेखा भी तक कहा जाए ऊपर स्टार्टिंग सुवर्ण रेखा महानदी गला सुवर्ण रेखा गला देन सुवर्ण रेखा पर की क्या आसो आउरी महानदी सुवर्ण रेखा बैतरणी ब्राह्मणी देन your एठी आ गुटे गला सुवर्ण रेखा पर एठी हम नबा बूढ़ा बड़ंग, राइट, एठी गला बूढ़ा बड़ंग देन ब्राह्मणी एंड फाइनली इज योर ऋषिकुल्या गंजाम रे अछि, एठी हम देखिले ऋषिकुल्या इज देयर, इट इज इन गंजाम, एठी ऋषिकुल्या एठी बोछि, दिस इज ऋषिकुल्या, राइट, ऋषिकुल्या रिवर ना मेजरली ऋषिकुल्या, सो एमाने एठी हम लिखि दे दिस इज ऋषिकुल्या। सो स्टार्टिंग हमें कोड करले सुवर्ण रेखा एठी बही की दिस इज योर सुवर्ण रेखा, राइट, सुवर्ण रेखा, तो सुवर्ण रेखा रो नै की टिल ऋषिकुल्या पर्यंत इते बड़ गोटे हमर एठी प्लेन क्रिएट होछि हला सुवर्ण रेखा नै की टिल एठी, सो वी कैन राइट दिस प्लेन the planes, this plane is a gift, this plane is mainly is highly fertile due to deposition of sediments, fertile due to the deposition of alluvial sediments, due to deposition of your alluvial sediments, right, due to deposition of your alluvial sediments this plain is highly fertile, right, this plain is highly fertile due to deposition of your alluvial sediments, okay, so eta kon be because of that one our agriculture crops बहुत बढ़िया हुए because of due to this one our agriculture crops hela supports to your agricultural crops की food crops और agriculture crops की जीवो को crop agriculture रे जीवो mainly kharif crops तने जदि हम देखिबा कि agriculture crops को that fills to agriculture crop productions को दिबो। अच्छा एठी मु पुण्य भी एठी पुण्य यदि agriculture crops की केना agriculture crops की रहउची हम coastal plains रे हला agricultural crops that are that
at coastal plains, crops produced at coastal plains, at plain area, or we can say plains area, plain or deltaic area, deltaic area. ये जो river माने जो करछन्ते कि साने कौन कौन crops, again agriculture crops को यदि कहबी प्रथमे रहइबा हमर food crops टा major गोटे food crops, agriculture crops majorly हम देखबो it is your food crops. ये ऊपर भी लिखा करे crops और plain. This is your agricultural crops at deltaic plain area. ये number 1 food crops रे के रहइबो तमने को निजे को है ना food crops रे के रहइबो which are coming in the food crops रे जेमदे रहइबा कि rice हैला rice रहइबो, then pulses dali, your oil seed हैला oil seed माने mustard oil एगुडा सब रहइबो oil seed आउ कोन रहइबो एटा रहला तमरो हैला, then maize, wheat, jawar एगुडा सब रहइले. तो मेजरली माने ये रहला तमरो प्राय तो एमन रहबे खरीफ क्रॉप्स रे मान रसले देखो एमन रहले कि रबी क्रॉप्स रे दे आर ऑल द इन योर रबी क्रॉप्स दिस आर ठीक अछि. ए प्लेन्स रे कोन कोन अछि आउ कोन हे परिबो सेकेंडरी कैश क्रॉप्स प्लेन्स रे हमर कोन रोज कैश रो के आसीओ अगेन कैश क्रॉप्स रे आसीओ जेमति जूट ओडिसा रे भलो होवे जूट सुगर केन जोटा जोटा हम ओडिसा रे भलो रोची जूट रोची सुगर केन रोची हला आउ कोन हे परिबो कॉटन एमन. अच्छा एगुडा सब को डिस्ट्रिक्ट रोची एमाने मोस्टली तमे जे देखियो ए जो कोस्टल प्लेन हैला को डिस्ट्रिक्ट रे बेनिफिट पाउछन जदी देखिबा हमें कि मोस्टली द डिस्ट्रिक्ट केंद्रापड़ा हैला केंद्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट पीपल ऑफ केंद्रापड़ा हैला हु आर गेटिंग बेनिफिट पीपल ऑफ केंद्रापड़ा जगत सिंहपुर हैला केंद्रापड़ा जगत सिंहपुर एमन रहबे मेजर केंद्रापड़ा जगत सिंहपुर हैला आउ भद्रक मेजरली एमने कॉटन आउ जूट और सुगर केन मेजरली चीफली करछन. सो एठी हमें जानिया कोन पाइले कि फिजियोग्राफी क्लासिफिकेशन एटा ଗୋଟେ क्वेश्चंस टाइप रे भी तमे आराम से एठी लिख परियो कि मेजर नॉर्दर्न प्लेट्यू रे हमें दिस आर द जदी हमें सेग्रीगेट करिवा. सो दिस आर द थिंग्स नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट हमें लिखिबो कम्स अंडर द सदर्न पार्ट ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू हैला मयूरभंज केंदुझर सुंदरगढ़ मेनली आसुंती. And this Eastern Ghat Hills starts your journey from your Mayurbhanj district in Odisha. Plateau majorly ke rochi eti ke plateau rochi this is your Sukinda Valley. This is your plateau mane table land. eti mu likh paribi plateau mane gota hala table land. This is right. The Sukinda Valley has holds rich chromite and iron ore and manganese. The central tableland area covers Angul, Dhenkanal, Bodh, Kandhamal, Sonpur. These are very rigid mass, very highly rigid mass. This one, central tableland. The areas of rich minerals resources. Eastern Ghat ki they run from your Mayurbhanj district to Rochi to Malkangiri पर्यंत Eastern Ghat करछि via Angul, Dhenkanal, Kandhamal, Bodh और Kandhamal. ହେଲା Bodh एटी छाड़ दे Bodh and Kandhamal रो देकी जाउछि. गरजाट हिल्स जोटा कि फेमस कहती गरजाट हिल्स हमर रन करछि लोकेट अनुगुल ढेंकानाल एटा भी लिखि परिबा हम हाईएस्ट पिक्स ईस्टर्न घाट रो भी हला की देवमाली कोरापुट रहला देन देवमाली पर की रहला देन महेंद्रगिरी रहला महेंद्रगिरी रहला हमर गजपति देन माळयगिरी अनुगुल टॉप 3 लिखि परिबा हला एंड देन गंधमार्दन आल्सो बोध आउ कंधमाल पेडी बोध जदी देखि परिबा बहुत सारा बहुत बड़े बक्साइट बहुत भलो अछि हला बक्साइट रिजर्व्स बेसिकली बोध कंधमाल. Next the Eastern Ghats again storehouse कौन कौन iron ore जदी देखिबा कि
स्टोर हाउस इंपोर्टेंट मिनरल्स रिजर्व्स आयरन ओर बक्साइट क्रोमाइट एसबू जिनस आउ मैंगनीज इथरे अछि आयरन स्टील इंडस्ट्री आउ एल्यूमिनियम इंडस्ट्री सपोर्ट करछि हला एटी हम लिखि परिबा नेक्स्ट योर सेंट्रल कोस्ट योर कोस्टल प्लेन्स लास्ट क्वेश्चन कोस्टल प्लेन्स रे बेसिकली प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय द इंपोर्टेंट रिवर्स की मेजर रिवर्स रो की महानदी रहला देन सुवर्णरेखा बुढ़ा बड़ंग बैतरणी ब्राह्मणी और ऋषिकुल्य माने हेल्थ है माने प्लेन करछन मेनली डेल्टाइक प्लेन जो कोस्टल प्लेन ता होची ए रिवर माने ही करछन एटी हम लिखले सेटा हाईली फर्टाइल प्लेन्स आउ माने the because of the due to the deposition of alluvial sediments हला सेडिमेंट्स आनी की जमा करूचंती बोली हमर योर डेल्टाइक प्लेन ता हमर क्रिएट होची अच्छा डेल्टाइक प्लेन कोन रोची कोन हमर उपकारता कोची कि एग्रीकल्चर क्रॉप्स ए डेल्टाइक प्लेन रे जेमति रहबा कि हमें देखबा फूड क्रॉप्स रे हला मेजर हमर ओडिसा स्टैपल फूड की दिस इज राइस स्टैपल फूड ऑफ ओडिसा वी कैन से द स्टैपल फूड ऑफ ओडिसा स्टैपल फूड ऑफ ओडिसा राइट मेज व्हीट जवर एट्स वासना कैश क्रॉप्स पुनी रोची जूट सुगर केन और कॉटन राइट ठीक अछि ताले सो ए सेशंस रे एति के आई होप ए जो पार्ट रे हमें डिस्कस कले ओडिसा फिजियोग्राफी पार्ट रे टोटल हमें डिस्कस कले सब फिजियोग्राफी क्लासिफिकेशन ओडिसा जो जो पार्ट रे डेफिनेटली एटा निश्चित रूपे हेल्प टू अंडरस्टैंडिंग रे अगेन विल मीट ओके इन द नेक्स्ट पुनी हमें देखा हबो पुनी ओके next session puni meet haba thank you so much thank you all for your message your patience जो भी जिनस जहाँ भी हम डेफिनेटली हमें आगु को आगे डिस्कस करिया बट मन रख आंसर राइटिंग बहुत बड़ा इंपोर्टेंट पार्ट को जिनस हमें फोकस करिवा केति के लिखिवा कोन न लिखिवा सेटा बहुत बड़ा इंपोर्टेंट माने व्हाट नॉट टू राइट इज मोर इंपोर्टेंट ओके प्रायोरिटाइज हिसाब रे सब बड़ा लिखिवा काहे कि हमर व्हाट लिमिट ता बहुत बड़ा जिनस सिविल सर्विस रे टाइम नहीं के व्हाट लिमिट ता ओके थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच ओके अगेन ओपीएससी तरफ रो हमर जोटा दिया होची ए दिस एटा को पुनी अगेन सर्व सक्षम बैच जोटा की सिविल्स ओसीएस पई सेटा हमर 4444 वेरी फाउंडेशन बैच प्रीलिम्स कम मेंस बहुत बढ़िया इतरे पूरा नवा सिलेबस रे पूरा पढ़ा होची सफलता बैच मेंस आंसर राइटिंग ऑफ कोर्स इट इज गोइंग ऑन नाउ बहुत बढ़िया एंड टू ऑप्शनल पॉवर्ड एंड योर सोशियोलॉजी 2999 and your Anubhag would have CSO point upcoming और महापैक 2.0 these are all your exciting जो माने जो भी देखु जो गोटे ये ऑफर्स गुडा दिया होची your dream to become true that is your efforts from your OPSC वाला physics वाला तरफ ला ओडिसा पे so thank you so much thank you everyone thank you so much thank you so much thank you so much